Hello students, this is Dr. Vibha Tiwari. In today's video, I'm going to discuss with you people the important sections of William Hazlitt's famous essay on going a journey. Students, William Hazlitt was one of the greatest English critics and essayists. He was not only a critic and essayist but also a very famous painter, social commentator, and philosopher. That means he was having a multifaceted personality. This essay is a part of his great work, Table Talk. So, in this essay, Hazlitt has basically dealt with the fact that it is always advisable to go on a journey all alone if you really want to enjoy your journey. So, this is the crux of your essay. Let's have some of the important sections of this essay. One of the pleasantest things in the world is going a journey. These are the, you can say, the very beginning lines of the essay. And the first thing that the essayist declares here is, according to him, one of the best thing in this world is going on a journey, and that too all alone. But I like to do it myself. Now it is something you can say strange. Normally the common perception is when you have to travel, when you are on a journey, you always crave for company. But our essayist says that the best part of going on a journey is to go by all alone, go by one's own self without any company. He gives you the reason also. He says, I can enjoy society in a room, but out of doors, nature is company for me. He says he can have the enjoyment of a society. That means he can enjoy talking to people or just having some discussion only when he is indoor. If he is outdoor, if he is in the company of nature, nature alone is the companion, serves as the companion for him. He doesn't need anyone else to give him company when he is all alone in the company of nature. That means in the very beginning he wants to say that if you really want to enjoy your journey, you should always try to be alone, because one can enjoy company during discussions or during debates or a general conversation when one is indoor. Outdoor, nature itself is a company for a person. I'm then never less alone when alone. He says, when I am all alone, that means when I am left with my own self, then I feel less alone, because at that time my mind is occupied with the surroundings. It is very much indulged in the happenings of the surroundings. The field his study, nature was his book. Quoting here, he says, the field his study, nature was his book. For me, at that time, nature itself serves the purpose of a book. It is like reading a book. I cannot see the wit of walking and talking at the same time. And that's why he says, when you are in the company of nature, we should fully concentrate on the beauties of nature instead of just wasting the time by talking or by just diverting our attention. Because when we are in the company of nature, nothing else is required to give us company. So इन द वेरी बिगिनिंग हम कह सकते हैं कि राइटर ये कहना चाहता है कि सबसे दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ों में से है यात्रा पर जाना, घूमना, और वो अकेले घूमना पसंद करता है क्योंकि उसका ये मानना है कि आप सोसाइटी को, ग्रुप को, कंपनी को आप एंजॉय कर सकते हैं कमरे के अंदर व्हेन यू आर इन अ रूम. जब आप किसी क्लोज्ड कंपाउंड में हो, उस वक्त आप कंपनी एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि उस वक्त आपके पास कुछ और नहीं है करने के लिए, आपका ध्यान बटाने के लिए. उस वक्त आप अपने साथियों के साथ कोई डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं. उस वक्त आपको कोई कह सकते हैं आप अपने आप को अपने अंदर नहीं समेट पाएंगे. लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, घर से बाहर रहते हैं, उस वक्त नेचर आपके लिए सबसे बेहतरीन साथी रहता है. उस वक्त आपको कोई और साथ की ज़रूरत नहीं रहती.
राइटर यही कहना चाहता है कि जब वो अकेला रहता है तब सबसे बेहतरीन तरीके से अकेलेपन को एंजॉय कर सकता है। कंपनी में रहकर आप किसी भी तरह से अकेलेपन को, क्योंकि लोग आपको अकेला छोड़ेंगे ही नहीं, तो आप अकेलेपन को अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको नेचर की कंपनी में रहना चाहिए। क्योंकि उस वक्त ऐसा लगता है मानो खेत आपके लिए पढ़ाई की चीज़ हो और प्रकृति आपकी किताब हो। उस वक्त आप नेचर की बुक को स्टडी कर सकते हैं वर्ड्सवर्थ की तरह। आई के नॉट सी द विट ऑफ वॉकिंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम। राइटर का ये बहुत बड़ा कह सकते हैं विचार है या आइडिया है कि एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। आगे ऐसे में वो इस बात को दोहराएगा भी। उनके हिसाब से एक समय पर चलना और बातें करना दोनों का कोई मेल नहीं है। या तो आदमी बातें कर सकता है, चर्चा कर सकता है, या फिर वो नेचर की कंपनी को एंजॉय करते हुए अपनी यात्रा को जारी रख सकता है। दोनों चीज़ों को एक साथ करना उसकी समझ के परे है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। द सोल ऑफ अ जर्नी इज लिबर्टी, perfect liberty, to think, feel, do just as one pleases. Now, this gives you the very crux, the very theme of this essay. He says the soul of a journey is liberty. It is all about freedom. Going on a journey, and that too, all alone, is all about freedom. Because at that time there is no one to disturb you. You can think, you can feel, you can do whatever you actually want to do. You do not have to mold according to the wishes of the other one, because there is no one else. So you enjoy perfect liberty at that time. We go a journey chiefly to be free of all impediments and of all inconveniences. He says very often, see, this is a very common fact. Whenever we get tired, when we are oppressed by the burden of work or life, at that time, in order to enjoy a little bit of freedom, we prefer going on a journey. Especially, see, that's why I think most of the people go on traveling during summer breaks or winter breaks, because they want to visit places. They just want to leave behind whatever stress they have in their lives. So he says we go a journey chiefly to be free of all impediments. This is the chief reason why we all want to go on journey. We simply want to just leave behind whatever obstacles, whatever difficulties we are facing at that juncture in our lives, and to leave ourselves behind much more to get rid of others. And he says not only this, see, we not only want to get rid of the other people, but also somehow we also want to get rid of that part of our own self which is too much workaholic. See, at that time when we are indulged in work, when we are facing so much of stress in our lives, at that time we need a break. We need to just break the monotony of life, and going on a journey is the best option according to the writer. It is because I want a little breathing space to muse on indifferent matters. He says, I want to go on a journey because I want to enjoy my own company. And simply, I want to have an elbow space, or what he calls breathing space, so that he could think on indifferent matters. When you are in the company of someone, naturally, your whole attention gets diverted by the talking or by the you can say discussion done by the other person. But when you're all alone, you can enjoy liberty, you can enjoy freedom, you can do whatever you want to do, you can feel whatever you want to feel, you can see whatever you want to see. So he says, I want to muse, I want to think about indifferent matters. I do not want to force myself to think in a particular line, in a particular manner. That's why I chiefly want to go on a journey. It's a kind of liberation unto him. सो राइटर यहाँ ये कहना चाहता है कि यात्रा पर जाने का मुख्य उद्देश्य होता है अपने आप को आज़ाद करना, मुक्त करना, अपने हिसाब से काम करना, अपने हिसाब से सोचना, अपने हिसाब से महसूस करने की आज़ादी, यानी अपने हिसाब से जीने की आज़ादी। और ये हमें तब मिल सकती है जब हम एकदम अकेले यात्रा पर जाएं। लेखक का कहना है कि हम यात्रा पर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से, बाधाओं से, रुकावटों से छुट्टी पाना चाहते हैं। हम अपने आप को अपने आप से छुड़ाना चाहते हैं। हमारा वो हिस्सा ज़िंदगी का जो पूरी तरह से काम के बोझ के नीचे दबा हुआ है, वो
वो अपने आप को मुक्त करना चाहता है, आज़ाद करना चाहता है, तो हम अपने आप को अपने आप से छुड़ाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों से, परेशानियों से, तनाव से छुड़ाना चाहते हैं। दूसरों से मुक्ति पाने की बजाय हम अपने आप से मुक्ति पाना चाहते हैं, और इसका एकमात्र उपाय राइटर के हिसाब से है यात्रा पर जाना। अपने बारे में बात करते हुए हेज़लिट कहते हैं कि मैं इसलिए सफ़र पर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे सांस लेने की आज़ादी चाहिए, सुकून चाहिए। और उस सुकून भरे माहौल में मैं चीज़ों को अपने हिसाब से देख सकूं, अपने हिसाब से सोच सकूं, मुझे किसी एक दिशा में ना सोचना पड़े। जो भी मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं, जो भी मैं आसपास देख रहा हूं, उनको मैं पूरी तरह से एंजॉय कर सकूं। इस वजह से मैं सफ़र में या यात्रा में जाना चाहता हूं। I like to be either entirely to myself or entirely at the disposal of others. It's a very, you can say, great thing said by him. He says, it is my habit that I can do only one thing at a time. Either I can be, you can say, indulged with my own self, or I can enjoy the company of the others. I cannot mix the two together. To talk or be silent, to walk or still sit still. I can either talk or be quiet. I can either walk or sit calmly. To be sociable or solitary. And I can only be one thing at a time. Either I can be in a group enjoying the company, or I can enjoy my loneliness. I was pleased with an observation of Mr. Corbett's that he thought it a bad French custom to drink our wine with our meals. See, here he has pointed out of the fact in, you can say, French. If we talk about French custom, they have the habit of taking wine along with food. It's a part of their culture. But Mr. Corbett says, I simply do not think it is right. Englishman ought to do only one thing at a time. He says one should do one thing at a time. If you are drinking wine, then you should go ahead with that only. And if you are having meals, then you should take your meals properly. There shouldn't be any mixing of the two. So I cannot talk and think or indulge in melancholy music and lively conversations by fits and starts. So that's what, just taking out the soul of this particular sentence, the writer says, that's why I also cannot do two things at a time. I cannot juggle two balls at the same time. I can either talk or think, or just indulge. I cannot just go on talking and thinking. I cannot do these two things together. Neither I can just proceed with some serious kind of musing, some serious kind of, you can say, thought process, as well as I can not have a lively conversation along with that. See what he actually wants to say. He says do one thing at a time. If you are indulged in thought process, then go ahead with that. If you are having a lively conversation with someone, go ahead with that. You should not mix. One should not mix the two things together, because then only you will be able to enjoy that one thing at its full. So इन लाइंस में राइटर ये कहना चाहता है कि या तो मैं बिल्कुल अकेला अपने साथ रहना चाहता हूँ, या मैं दूसरों की कंपनी एंजॉय करना चाहता हूँ, या तो मैं चुप रहना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ, या मैं चल सकता हूँ या चुपचाप बैठ सकता हूँ, या तो मैं सामाजिकता के साथ जुड़ सकता हूँ या अकेले रह सकता हूँ। यानी कुल मिला के राइटर का कहने का मतलब ये है कि मैं एक समय पर एक ही काम कर सकता हूँ। मिस्टर कॉबेट का उदाहरण देते हुए राइटर ये कहता है कि उन्होंने ये कहा था कि एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंच कस्टम का उदाहरण देते हुए, फ्रांसीसियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे फ्रांसीसी लोगों का ये कल्चर का पार्ट होता है कि वो अपने खाने के साथ वाइन भी लेते हैं, मतलब दोनों चीज़ें इकट्ठे, पीना और खाना दोनों काम इकट्ठे करते हैं। तो राइटर का ये कहना है कि मिस्टर कॉबेट का ये कहना था कि ये एक बैड ट्रेडिशन है, ये एक बुरी चीज़ है, ये कस्टम जो है, ये इसका कोई एक तरह से
समझदारी वाला स्टैंड नहीं है अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि व्यक्ति को एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। तो अब बात ये उठती है कि राइटर का इससे क्या विचार था, क्या विचार मेल खाता है। तो राइटर का बिल्कुल इससे विचार मेल खाता है। उनका खुद का भी ये मानना है कि आई कैन नॉट टॉक एंड थिंक, कि मैं दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता, बात करना और सोचना, या गंभीरता से सोचना और बातचीत करना, दोनों चीज़ें मैं एक साथ नहीं कर सकता। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि मिस्टर कॉबिट, जिनका ये सेंटेंस कोट किया है हमारे राइटर ने, वो बहुत फेमस इंग्लिश पैम्फलेटियर, जर्नलिस्ट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे। तो उनका ये कोटेशन था जो राइटर ने, जिसको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है, कि जैसे फ्रेंच लोगों के बारे में मिस्टर कॉबिट कहते हैं कि वो दो चीज़ें इकट्ठे करते हैं जो कि उचित नहीं है, उसी तरह से मैं भी दो चीज़ें इकट्ठे नहीं कर सकता। या तो मैं बात कर सकता हूँ या सोच सकता हूँ। बात करने के साथ साथ सोचना और सोचने के साथ साथ बात करना, ये दोनों चीज़ें झटके से एक एक करके, ये दोनों चीज़ें मैं नहीं कर सकता और ना ही ये उचित है।